Good morning, children. Yesterday I taught you Chatur Lomadi, yesterday class, the clever fox. Maybe you understood, I think. Today I am going to teach these grammar points, Shabdartha and question answers and Viloma Shabd, these and all. This is also there for FA2 test, children. Read very neatly. For you, Mera Ghar, part 5 and part 6. दो लेसन है आपके लिए. 2 lessons are there to read for FA2 test. First one is Chatur Lomadi. For FA2 question, lesson number 5 and 6. In Chatur Lomadi, here they have given the Shabdarth. Kavva. Read very carefully, children. Shabdarth. First one, Kavva. You know, Kavva means what? Ek pakshi, we can say in Hindi. Ek pakshi. In English, a crow. Crow. And the second one is roti. Chapati. They have given like this, chapati. Roti means in rice also we will make a rice powder. That also we will call roti. Roti in Kannada. Chapati. And third one is Dali. Means Tahani. Shaka. Tongegalu, branches of the tree. Branch. Sundar. Sundar means Manamohar. Akarshak. Manamohak also Sundar only. Very attractive, we can say. Akarshak. Akarshak means beautiful. Khush. Prasanna. Happy. Khush means prasanna, happy. Santosh also we can say. Sixth, Bacha. Balak. Bacha means Balak, a child. Bacha, Balak, a child. Paid. Seventh one, paid. Ruksha. A tree. Eighth one, Raja. Means Mukhiya.
किंग, एक किंग। 9th one, मूर्ख, बेवकूफ। मूर्ख मीन्स बेवकूफ, स्टूपिड। पछतावा, पश्चाताप, repentance। Like this, children, you read very neatly Shabdartha, each word say 5 times. Then only you will get what is the meaning of that. The first one is Kawwa ek pakshi, roti means chapati, dali means tahani or shaka, sundar akarshak, khush prasanna, bachcha balak, पेड़ means वृक्ष, राजा means मुखिया, मूर्ख बेवकूफ, पछतावा means पश्चाताप। Then after that, the second man is, this is the first man now, and the second man will write question answers to that. फर्स्ट वन, कव्वे को रोटी कहाँ से मिली? कव्वे को रोटी कहाँ से मिली? कव्वे को रोटी एक बच्चे से मिली, आल्सो यू कैन राइट। बच्चे से मिली नहीं, बच्चे के हाथ से, एक बच्चे के हाथ से वो रोटी को कौवा छीन ली, ऐसा उत्तर है। हियर दे हैव गिवन लाइक दिस, कौवे को रोटी एक बच्चे से, दिस मच यू राइट चलना, बच्चे से मिली, like this enough. And second one is, लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों भर आया? लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों भर आया? क्योंकि कौवे ने रोटी को खाते देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। कौवे को रोटी खाते हुए देखकर और खाते देखकर लोमड़ी के मुंह में
पानी भर आया। थर्ड वन, लोमड़ी ने कौवे की क्या प्रशंसा की? We'll write here. Prashamsa means he praised Lord to him. What is that? कौवा तो बहुत सुंदर और आज बहुत खुश है। आप अगर कोयल से गाना सीख ले तो आप बहुत अच्छी तरह से गाना गा सकते हैं, ऐसे इनकी प्रशंसा की। लोमड़ी ने कौवे की क्या प्रशंसा की? उत्तर, आप बहुत सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर और खुश दिख रहे हैं। यदि आप यदि आप कोयल की तरह मधुर वाणी में गाना भी सीख ले तो आप पक्षियों के राजा बन जाएंगे। और बन जाओगे ओनली उड़े। इस तरह उन्होंने लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की। इस तरह प्रशंसा की। Write like this. The next one is fourth one, कौवा कैसे मूर्ख बना?
कैसे मूर्ख बना। लोमड़ी की चाल में फंसकर वह मूर्ख बना। लोमड़ी की चाल में फंसकर मूर्ख बना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। हम इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? फिफ्थ क्वेश्चन एंड आंसर। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? हम किसी भी बातों में नहीं फंसना चाहिए और नहीं आना चाहिए। हमें किसी हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और नहीं फंसना चाहिए। Like this, children, question answers. Read very neatly. Only 2 lessons for you for AP2 test. The next main is विलोम शब्द लिखिए। थर्ड में विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड्स चलना लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। The first one is नीचे means down। नीचे का विरुद्धार्थ ऊपर। The second one is मधुर means sweet voice। इसके लिए कठोर। Rudely they are speaking now for that। राजा means king। रंक right rank। मूर्ख, this is third question। Fourth one is मूर्ख means बेवकूफ। चतुर means clever। शब्दों के शुद्ध वर्तनी में लिखिए।
You correct the spellings of each of these words. Correct the spellings, children. शुद्ध वर्तनी में लिखिए. शुद्ध वर्तनी में लिखिए. First one is roti. This is correct, children. Roti. Wrong. Then it is roti. And here second one, mu. Va letter. This is wrong. Instead of va letter, you write ha letter. Mu means mouth. Like this. The third one is bani. Not. You write va letter. Vani. Madhur. Here small da they have given. This is wrong. Big da should come. Madhur, like this. Recorrect the words like this. The next main is उदाहरण देखकर शब्द लिखिए. Fifth main. और उदाहरण के अनुसार लिखिए. Make it 3 columns like this and like this. Past, present, future tense. Here khana, they have example is khana, eating. Khilana, खिलवाना. खाना, खिलाना, ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು, ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Will be. Is. पीना, पिलाना. हमें पानी पिलवाना है. पिलवाना. फ्यूचर. प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. लिखना, बರೆಯುವುದು. लिखाना, लिखवाना. Like this. चलना, चलाना, चलवाना. Practice very neatly, children. First is खाना, खिलाना, खिलवाना. पीना, पिलाना, पिलवाना. लिखना, लिखाना, लिखवाना. चलना, चलाना,
chalwana. Like this you write, children. Very neatly you write. And these are all mains I have given today to you people. Practice very neatly. And another one main is there, ekavachan or bahuvachan. If it is ekavachana, singular means you make it plural like this. If they have given in singular word means in the examination or in the test, you make it plural. I'll give now. वचन बदलिए. वचन बदलिए. They have given in the textbook. Here, ekavachan, kauva is one singular. ಒಂದೇ ಕಾಗೆ ಕವ್ವ. You make it plural like this, कव्ये. आ जगह पे ये लेटर आना चाहिए. Make it plural. Second one, dolly. Only singular, this is dolly. Only one word. Dahlia, many more. Roti. One roti. This is rotiya. Like this. And fourth one, bachcha means एक ही बच्चा. Many more like this. बच्चे. You make it like this. Lomdi, singular. Make it plural. Lomdiya. This I will give for the test, children. Practice very neatly. And we'll continue here. Sixth one is Yojana means plan. Yojanegalu. Yojanaye. Like this. Seventh one, chonch means bee. Chonche. These are all you practice very neatly, children. If it is ekavachana means you make it bahuvachana. If it is singular means make it plural like this. Practice. Kavva means kavve. Dali, daliya. Roti, rotiya. Ya letter is it will come for in the plural words while writing the plural. Bachcha, bachche, ye letter. Lomdi, lomdiya. And yojana, yojana, ye letter is you will get while making plural. Chonch, chonch. Practice very neatly, children, and write very neatly the test. We'll continue next.